चार्टर टू कैसे हुआ? कैन नेवर माइंड. हेलो. मैं कह रहा हूँ चैट में लिखो ना कुछ. चैट में कुछ लिखो. मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ. आवाज़ आ रही है ना? हेलो. हाँ, मैंने ये कहना था कि मैं तुम्हें थोड़ा सा ना, लेट मी गिव यू सम प्रीफेस ना, to I'm gonna tell you some small story now which recently happened to me. So this was a very much awaited game because all the Harry Potter games they failed because they were about Harry Potter himself, and everyone knows what happens in Harry Potter. So they kind of decided that they're gonna make a movie in the J.K. Rowling's, sorry, a game in the J.K. Rowling's world, but with a different story. तो 100 years पहले की ये है, ठीक है. But something happened. That what happened was, I don't know if it was last year or the year before that, but some while ago, J.K. Rowling made some transphobic comments, ठीक है ना, which is obviously against the LGBTQR plus जो भी हो चुके हैं ना. So, so there was a lot of hate against this game as well, because in the end she owns the right to all the J.K. Rowling mythology or whatever. So obviously when this game is earning so much money, she is also getting some chunk of it ना. Obviously आवाज आ रही है ना सही? हाँ. तो अब जाहिर है अब उसको भी तो पैसे मिलने हैं इस गेम से, अब क्योंकि इतनी इस गेम में तो सारी चीज़ें ही वही हैं, ठीक है ना. क्योंकि देखो ना, आई हैवंट रेड द बुक्स, आई हैव वॉच लिटरली, आई डोंट नो हाउ मेनी हैरी पॉटर मूवीज आर देयर, आई हैव वॉच देम 3 times. Like in the past 10 days, I even tried to watch Fantastic Beasts. I couldn't watch it because they weren't as good, yeah. ठीक है ना, I watched the first movie of Fantastic Beasts, so I couldn't watch them. So coming back to what I was telling you, so I haven't read the books, but I'm sure in the books there's so much detail about the past, what has been happening before in the Harry Potter world. So they decided to make this game, and everyone was very excited. They were also very excited because Warner Brothers is the
इज़ द प्राइमरी स्टूडियो विच इज़ मेकिंग दिस गेम, और सेकंड स्टूडियो है उसका नाम मैं भूल गया हूँ, वट एवर। खैर मैंने भी डिसाइड किया है गेम लेने का। मैं तुम्हें मुझे बताओ कि कितना नज़र आ रहा है ना ये जो सामने स्टोर, मैं तुम्हें स्टोर पेज में लेके जाना चाहता हूँ इस गेम का। ये स्टोर पेज देखना, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ इसकी कीमत क्या है और कितने लोगों ने ख़रीदी है, तुम्हें आइडिया देने के लिए। नज़र आ रहा है, ये बेसिक गेम है, ये $60 की है, जो तकरीबन मुझे भी कोई सेल शेल में एक और जगह से मैंने इसकी की पकड़ी, तो मुझे स्टीम के ऊपर ये पड़ गई तकरीबन कोई 15,000 रुपये, नहीं 15 नहीं, तकरीबन कोई 14,500 रुपये की। ये इसका डीलक्स वर्जन है, ठीक है ना। ये रिलीज़ हो गया था असल रिलीज़ से 3 दिन पहले, ठीक है ना। अर्ली रिलीज़ इसको मिली थी। ये ऑलमोस्ट कितने का है, $70 का, ठीक है ना। अब डू द मैथ योर सेल्फ, ठीक है ना। अब तुम देखो सिर्फ पीसी पे, ठीक है ना, ये पीसी का इंटरफेस है, स्टीम है। मैं चलो स्टीम भी थोड़ा दिखा देता हूँ। ये सारी ए गेम्स है, ए गेम्स बड़ी गेम्स होती हैं, मैंने ख़रीदी हुई है सर। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, शैडो ऑफ मोर्डोर, विचर 3, बैटलफील्ड 2042 और बेतहाशा और भी गेमें हैं जो मैंने इंस्टॉल नहीं की हुई। ये देखो ना कितनी ज़्यादा गेमें हैं लेफ्ट पे, ठीक है। अच्छा अब इस गेम पे वापस आते हैं, हॉगवर्ट्स लेगेसी पे, ठीक है। इस वक्त सिर्फ स्टीम पे इसको कितने लोग खेल रहे हैं, अ लिटिल लेस देन 1 मिलियन पीपल आर प्लेइंग, 461,000, और ये सिंगल प्लेयर गेम है, इट्स नॉट मल्टीप्लेयर, ठीक है ना। और एक ऐसा वक्त था कि मैंने 700,000 भी देखे हैं, मैंने 800,000 भी देखे हैं, और टू डेट ट्विच जो बहुत बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म है ना, इसमें इट इज़ द मोस्ट स्ट्रीम्ड सिंगल प्लेयर स्ट्रीम्ड गेम एवर। मतलब जब ट्विच पे स्ट्रीम हुई ना तो 1.3 मिलियन लोग इसको बैठ के देख रहे थे, ठीक है ना। अच्छा अब मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ कि अब जिस तरह मैंने तुम्हें बताया कि उसने काफ़ी ज़्यादा हेट मतलब शी मेड सम ट्रांसफोबिक कमेंट्स, ठीक है ना। सो देयर वाज दिस कम्युनिटी विच वाज अगेंस्ट हर, इट वाज अगेंस्ट दिस गेम, कि क्योंकि इवेंचुअली पैसे तो उसको जाने थे। तो अब इनने किया ये कि गेम के शुरू में कुछ चीज़ें की ना, बल्कि नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, ताकि तुम्हें फिर उन अगले मुद्दे पे आऊँगा। कौन सी वीडियो है, मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ, हाँ ये। नहीं नहीं ये नहीं है, ठीक है। ये वाली है, इसकी मैं थोड़ी वॉल्यूम भी बढ़ा देता हूँ। अच्छा ये दूसरे है ना, इसमें आपने बेसिकली करना ये हॉग्स मीट पे जाना है। हॉग्स मीट इज़ दैट टाउन और विलेज वट एवर यू कैन कॉल इट, इट्स नेक्स्ट टू हॉग्सवर्थ, ठीक है ना। हॉगवर्ट्स में अगर तुम्हें याद होगा एक फॉरबिडन फॉरेस्ट होता है और एक ये हॉग्समीड होता है। हॉग्समीड में जाके आपने ना अपनी सप्लाईज लेनी होती हैं, क्योंकि आप जब यहाँ आते हैं तो आपकी सप्लाईज सारी तबाह हो जाती हैं। तो अब मैं हॉग्समीड में गया, तो नो, अब मैं गया हॉग्समीड में, ठीक है ना। अब मैं हॉग्समीड में गया, सब कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, एक ट्रोल को मारा। अच्छा अब इधर देखना, अभी मैं ना 3 ब्रूम स्टिक्स, तुम्हें याद है ना, 3 ब्रूम स्टिक्स एक पब है ना हॉग्समीड में, जिधर जाके वो बटर बियर पीते हैं, याद है। अभी देखना एक वेird चीज देखना, इसको छोड़ो यार, ये देखना, ये देखना। It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. सिरोना द बारमेड, इसकी आवाज सुनी है बारमेड की। Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. एग्जैक्टली, ठीक है ना, इट्स मैनली, ठीक है ना। सो आई वाज लाइक यार ये इतनी बड़ी गेम है, क्योंकि जो इतनी बड़ी गेम्स होते हैं ना उसमें हज़ारों डेवलपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। इनने ठीक ठाक अच्छा बड़ा वर्ल्ड बनाया है, ओपन वर्ल्ड है। ओपन वर्ल्ड कोई छोटी चीज़ नहीं होती गेम में। मैं उसी वक्त, स्टीम बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, स्टीम इज़ द प्लेटफॉर्म फॉर पीसी गेमिंग, ठीक है ना। यानी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि इसका मालिक ही इज़ लिटरली ही हैज़ एन एम्पायर ऑफ $6-7 बिलियन, ठीक है ना। एक कुछ सालों पहले तो $1-2 बिलियन था, मतलब इतना वो पैसे वाला बंदा है, ठीक। सो आई गो टू स्टीम and I start this post. So this is me, Gerald Z. Rivina, Sirona's voice, ठीक है ना। So the owner slash barmaid of 3 Boomsticks in Hogsmeade, is her voice bugged? It's a man's voice. अब लोगों के जवाब क्या आ रहे हैं? She's a trans character, so you know. Just in the English version, क्योंकि गेम के versions भी तो बहुत है ना। Can't you just search on forums for this? It's been discussed every 20 minutes. Supposed to represent a trans person, I think. He, अब एक बंदे ने he लिखा हुआ है ना, ठीक है, obviously we're not going to start, I'm not going to start that debate. What are you laughing at, ठीक है ना। Their attempt at being edgy apparently. Who is the VA?
पता नहीं वॉइस एक्टर ना, वी इज द वॉइस एक्टर, ट्रांस इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्म। अच्छा सो पीपल आर स्टार्टेड ट्रोलिंग, सो आई आस्क्ड अ, ठीक है ना, सो आई आस्क्ड अ जेन्युइन क्वेश्चन, ठीक है ना, आई आस्क्ड अ जेन्युइन क्वेश्चन अबाउट समथिंग विच इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, ठीक है ना, इन दिस गेम, ठीक है ना। एंड जैसे ही मैंने स्ट्रीम बंद की, क्योंकि मैं स्ट्रीम कर रहा था ना, मैं तुम्हें वो भेज भी दूंगा जब मुझे ये मैसेज आ गया। अब ये मैं जूम नहीं कर सकता, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अकाउंट अलर्ट फॉर योर कम्युनिटी प्रिविलेजेस have been suspended for 2 weeks for violating of the Steam subscriber agreement. Trading, inviting, editing your profile, uploading content, commenting and otherwise interacting with the Steam community has been disabled. Trolling, ठीक है ना। We recommend you reviewing our Steam community rules and guidelines, blah 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 blah। और लिखा हुआ है कि 26 फरवरी को बेसिकली अब मैं मिसाल के तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या हो गया। अब ये एक है कि लोग अपने को बग बता रहे हैं, मैं इधर कमेंट नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये देखो लिखा हुआ है, सॉरी इफ सम काइंड ऑफ एरर है, देयर वाज अ प्रॉब्लम पोस्टिंग योर कमेंट, ठीक है ना। मेरे साथ ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल भी इस तरह की अजीब गरीब ट्रोली हरकतें नहीं करता। लिखा हुआ योर प्रोफाइल इज़ बीइंग फोर्स्ड प्राइवेट ड्यू टू एन एक्टिव कम्युनिटी बैन ऑन योर अकाउंट, ठीक है। तो खैर वट। अच्छा अब मैं तुम्हें कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ जिस गेम में बहुत वेयर्ड हैं, ठीक है ना, दे आर वेरी वेयर्ड। Just to give you a perspective, I'm going to show you something. I'm going to start the game right now. ठीक, just to show, मैं एक कैरेक्टर शुरू में बनाऊंगा जिस तरह बनाते नहीं है, क्योंकि इसमें आप कस्टम कैरेक्टर बनाते हैं ना, विच इज़ वेरी वेयर्ड। मतलब किसी भी गेम में मैंने ऐसा नहीं देखा। गेम्स मैंने गे कैरेक्टर्स भी देखे हैं, गे रोमांस भी देखे हैं, उसके बाद ऑल सॉर्ट्स ऑफ सपोज्ड यू नो ओपन माइंडेड एंड प्रोग्रेसिव शिट ना, सपोज्ड प्रोग्रेसिव शिट। सो आई एम गोना शो यू समथिंग। गेम मैंने लगाई है, हाँ लगा लिया, ठीक है। मैं दिखाता हूँ। अच्छा हाँ, मैंने तुम्हें ये बताया ही नहीं, हम जब दफ्तर में थे, कि मैंने इसलिए शुरू किया है, नया कैरेक्टर बनाया स्लिदरिन का। मैंने कहा यार इट्स टू, मतलब यार ग्रिफिंडोर, एवरीवन वुड बी जॉइनिंग ग्रिफिंडोर। आई जस्ट, क्योंकि मैंने सुना था कि आप डार्क विज़र्ड भी बन सकते हैं इस गेम में, ठीक है। तो मैंने कहा डार्क विज़र्ड बनते हैं, तो मैंने कहा वो स्लिदरिन में ही जाके आप बनेंगे। ये थोड़ा यार एक प्रोग्रेस बार चलेगा। ये कोई ग्राफिक्स से रिलेटेड चीज़ है, मुझे नहीं पता क्या, ये हमेशा आती है इसमें। बहुत एक अजीब चीज़ है। अब सोचो बच्चे गेम खेले हैं तो उन्हें कैसा महसूस होगा, उनके दिमाग में क्या असर होगा। दिस इज मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट माय ब्रदर। सोचो कितने पैसे कमाए होंगे अगर आधे मिलियन लोग एक वक्त पे सिर्फ पीसी। अब एक्सबॉक्स का तो पता ही नहीं है, प्ले स्टेशन का पता ही नहीं है। आराम से $100 मिलियन इन्हें हफ्ते के रिलीज़ में कमा लिए हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अल्लाह करे कैरेक्टर हम बना सकते हैं। चलो एक नया कैरेक्टर बना सकते हैं। ये मेरा है टॉम और वोलो रेडर। ये मेरे भांजे आए थे, वो खेल रहे थे, उन्हें सीरियस ब्लैक बनाया था। अच्छा नाउ ओके स्टार्ट गेम। अब तुम देखना एक चीज़। ओके लेट्स स्टार्ट, लेट्स चूज अ रैंडम कैरेक्टर। ओके दिस लाइक दिस डूड। अच्छा सबसे पहली चीज़ वेड, एवरीवन इज मिक्स्ड रेस यार। सारे कैरेक्टर्स मैक्सिमम मिक्स्ड रेस हैं, देखो सारे मिक्स्ड रेस कैरेक्टर्स हैं। मतलब कोई गोरा तो है, मतलब समझ रहे हो ना कि टिपिकल गोरा कहाँ है, हर किसी में एक मिक्स्ड रेस की टच है, ठीक है ना। अच्छा इसको भी छोड़ो, अभी ये लड़का ले लिया। अब तुम देखना एंड पे जाता हूँ मैं इसके। अब इसमें आप जेंडर का सीन ही नहीं है, विच और विजर्ड वाला सीन है, ठीक है ना, विच और विजर्ड। और कपड़े भी नहीं बदल रहे भाई, विच और अच्छा अब मजे की बात, वॉइस टोन 1। अब सोचो, अब ये लड़का है ना, अब इसकी आवाज सुना। I am indeed a student, but I could very well be able to help you. ये देखो, I'm eager to get to Hogsmeade. अब आप सपोजिटली इसकी इस एक, so there's this character which looks like a male 100%. You can change this character's voice to a female. Look. It was one. A few cobwebs and some dust. I am indeed a I'm eager to get to Hogsmeade. ठीक है, कभी भी किसी गेम में ऐसा नहीं होता। हजारों गेम खेली हैं जिनमें आप कैरेक्टर कस्टमाइज करते हैं। यू लिटरली आप जेंडर चूज करते हैं, मेल और फीमेल, और फिर उसकी ही वही वॉइस एआई आपको असाइन करता है। इसमें आप कुछ भी चूज कर लें, कुछ भी कपड़े बना लें, कुछ भी नाम रख लें, ठीक है ना। अच्छा चलो मैं थोड़ा सा ना अपने मेन प्रोफाइल में जाके थोड़ा सा तुम्हें वो दिखा देता हूँ, स्लिदरिन हाउस अंदर से। मतलब ठीक है, मतलब ग्रिफिंडोर जैसा तो नहीं है। अच्छा तो why did they do this? So apparently there is this we believe they did this to avoid
all the hate which was coming towards it because of what J.K. Rowling said. Because, like I said a couple of times already, she's profiting a lot because of this game. Okay, now I'm gonna show you Slytherin. अच्छा, मैंने गेम काफ़ी खेल ली थी ना अभी. मैंने ये वाला प्ले थ्रू नहीं वैसे वो कल मैं शायद अपलोड करूँ. मैंने कर तो लिया एडिट. कपड़े भी इसके बदल के हैं क्योंकि ये जो इसने रोब पहना हुआ है इसके लेवल बहुत ज़्यादा है. अच्छा, स्लिदर हम कैसे जाएं? अच्छा हाँ, डायरेक्ट फास्ट ट्रैवल करते हैं. रुको. साउथ विंग ऑफ हॉगवर्ट्स. ओके, हॉगवर्ट्स एग्जैक्ट. क्लॉक टावर. नहीं 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 यार, आई हैव टू गो टू माय हाउस. आई थिंक दिस इज माय हाउस. आई थिंक Crucifix classroom, astronomy tower. No, this is the Great Hall. Damn it, yaar. Central Hall. Faculty Tower. Clockwork Courtyard. Hospital Wing. Damn it, yaar. Now I feel stupid. इधर ही है यार कहीं. ओह माय गुडनेस. अच्छा, ढूंढते हैं यार, टेंशन ना लो, फिरते हैं अभी. भागना नहीं है अभी यहाँ से, ठीक है. अच्छा, उसमें जाते हैं. रुको एक सेकंड. साउथ विंग, हॉगवर्ट्स, साउथ एग्जिट. नो ब्रो. ग्रीन हाउस भी नहीं है. ग्रेट हॉल में जाते हैं. फुट हाउस भी नहीं है. ग्रैंड स्टेयरकेस में जाते हैं. रेवन. यस, हियर इट इज. तुझे तेरा घर नहीं पता यार. मैंने असल में पता है वापस कभी जाने का मौका ही नहीं मिला. वो जिधर से स्टार्ट करता हूँ फिर क्वेस्ट शुरू कर देता हूँ. अब लगता है गेम बंद हो गई. कसम से मजाक नहीं कर. नहीं, अच्छा नेवर माइंड. ये देखा है, बड़ा ग्रीन सा है और थोड़ा सा ना सांप. पता है लिटरली एंटर होते हैं तो सांप भी होता है उसमें. वो देखो सांप का मुंह. यार ग्रिफिंडोर जैसा नहीं है बट इट्स because in the end Slytherin was a parcel tongue, so it has a snaky theme, this whole common room. ये common room है. It's not bad, it's good. Hogwarts has brought me and my siblings closer together. We've had to rely on each other without having our parents about. अच्छा, सैड बात पता है क्या गेम में करती हैं पेंटिंग्स, दे मूव बट नॉट ऑल ऑफ देम मूव. लाइक अभी देखना ना, शायद मूव ना कर रही. वो कर रही है, एक नहीं कर रही. अच्छा, वो भी कर रही है, अब सारी कर रही है. नेवर माइंड. मुझे देखने तो शायद दूसरों के आप कॉमन रूम में भी जा सकते हैं बट असूलन तो आप शायद ना जा सकते हो. मगर इधर मैं कभी नहीं आया. आई थिंक दिस इज माई डोम. दिस इज द डोम. आई डोंट नो इफ इट्स माई डोम बट देखा है वो उसी तरह ही है. मतलब डोम का जो वो बेसिकली. अच्छा, चेस मूव भी करती है इसमें. अच्छा, निकलते हैं यहाँ से. ओह, देखना तो शीशे में क्या होता है. अपनी शक्ल नजर आती है. हाँ, आ रही. गुड यार. अच्छा, उसके बाद कहाँ जाएं? ये बहुत अजीब चीज़ लगी थी मुझे. निकलता हूँ डोम से बाहर, निकलता हूँ ना, इसकी वो स्नेक वाली एंट्रेंस दिखाता हूँ. डैम इट, किसी और के कमरे में बढ़ गया हूँ. एक सेकंड. बड़े अजीब तरीके से स्नेक घूमता है और वो नॉट बैड, डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट. देखा है पेंटिंग्स मूव नहीं कर रही वाली.
I mean, you expect them to move, but whatever. यार फिर domes आ रहे हैं. Shit. I literally feel stupid now. ये क्या है? Oh, never mind. Maybe ये. Oh हाँ. I think मैं यहाँ से तो आया हूँ भी है ना? ये हो सकता है. I suppose I'm not allowed up there. Damn it. My older sisters taught me everything I need to know about Hogwarts before they stayed in the castle, including how. ऊपर जाते हैं. हाँ. Oh, nice to see you. हाँ ये है एग्जैक्ट. ये देखना अब. ये देखना मैं अंदर जाऊंगा ना तो प्रॉपर स्नेक मूव करेगा. देखा गायब हो गया. पास जाऊंगा तो बाहर निकल आएगा. ये अच्छा मुझे ज़रा देखने तो दूसरों में जा सकते हैं दूसरों के कॉमन रूम्स में. जो लिखा हुआ तो है जा तो सकते हैं. रेवन क्लॉ टावर. अच्छा रेवन क्लॉ टावर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं गया था कल वहाँ खेलते हुए. बड़ा इंटरेस्टिंग था यार वैसे वो भी. अगर वो वही जगह है. आई थिंक मैं कॉमन रूम में तो नहीं जा सकता. बस थोड़े उनके टावर में जा सकता हूँ. अच्छा ऊपर जाता हूँ. उसके बाद में ना पता उधर भी जाएंगे. हॉग्समीड में. हॉग्समीड रात के वक्त इतना अच्छा लग रहा होता है ना यार इस गेम में. वैसे मुझे फुल टाइम लगता है पता है ये वो होगा रेवन क्लॉ का. व्हाट यू कॉल इट द एंट्रेंस. ऑनेस्टली ऑब्वियसली वेट अ मिनट. Revelio. To gain interest one must solve a rather eccentric riddle. Use logic and reasoning post. Oh, let's Google this yaar honestly. Raven claw dork knocker. Door knocker shit. Door knocker riddles and answers. अच्छा what gets wetter the more it dries. उसके बाद अच्छा एक मिनट. शेट यार अजीब सी कोई तस्वीर तो बनी हुई है इधर. ऐसा कुछ भी नहीं है लिटरली. अच्छा नीचे शायद जाना और को. लिखा हुआ है यू डोंट नो हाउ टू प्ले. यार मुझे लिटरली मैं इस तरह के काम नहीं अभी तक किए इस गेम में. सिर्फ मेन वो खेली है. मिशन क्या करूं एक मिनट. एक कर लेता हूं यार. द गर्ल फ्रॉम युगाडू. Natty and I have asked to meet her at a hamlet called Lower Hogsfield, just south of Hogwarts. Just see what she wants. Okay, let's do it. मैप कहाँ है भाई. चलो यहाँ से थोड़ा शॉर्ट पड़ जाएगा. यहाँ जाते हैं डायरेक्ट. शेट यार मैं घोड़ा बुलाने लगा था. घोड़ा तो है ही नहीं. होता ही नहीं है इस गेम में. शेट चेक किए हैं. सनफ्लावर चेक किए हैं.
यार वो चेक करो यार, उसका घर भी है, क्या नाम है, हैग्रिड का। चेक किया यार। You're a wizard, Harry. Revelio. अबे जा यार तो। I should investigate. Bro, I swear I can't speak Russian, I swear. You know, whenever you comment in Russian, I just go to Google Translate and send your Russian message back. I swear I can't speak Russian. It is good to see you, my friend. Now what? Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? They wanted something I can't say. Okay, let's let her. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Sorona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Like, can you imagine Men they like they Rookwood and kind of Harlow showed are a the reason trans my mother and character I left Matilda standing up Island. to I am not going to sit by badass and villains. watch them destroy my new home. Achha, I'm glad to hear it. This could be dangerous. Okay. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Was that it? Come on. Off on another adventure. I swear I thought I'm gonna learn some new spell. What's going on here? छोड़ो मड़ा हॉग्समीड जाते हैं. हॉग्समीड किधर से अच्छा यहाँ से यहाँ जाते हैं. Hogsmeade, here I come. An honest day's work for an honest sickle. That's my... Three boomsticks कहाँ है? Oh, wait a minute. This sounds fun.
Revelio. ओह हे ओह ये तो कोई स्टूडेंट है यार. Dude. Hmm. अच्छा बल्कि छोड़ो यार, मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ. जो जो हॉल नहीं है, मतलब द फेमस ग्रेट हॉल इन हॉकवर्ट्स. I'm gonna show you that. हाँ यार. Shit, I can't go there, man. Damn it. करीब की कुछ जगह जाते हैं. इसको करते हैं वे पॉइंट. इसको करते हैं ट्रैवल. I have a feeling you just can't randomly, you know, go into the Great Hall. I mean, wherever it is. Oh, this better be the Great Hall. It can be. Oh. Wait a minute. Oh, the moving staircases. अच्छा मैं एक दफ़ा खेल रहा था ना, मैं छत पे भी पहुंच गया था, पता नहीं कहाँ से. उसमें बढ़िया अजीब सी चीज़ थी वो. आप उसके अंदर घुसते थे, पता नहीं आपको बेसिकली ना, देयर वाज दिस फ्रॉग, सो इट वुड swallow you, और देन you would end up at the I've other always side said of that the travel castle's broadens roof. the mind. ये चेक किया, ये चेक करो. यहाँ मैं कल आया था वैसे रात को.
यार रूम ऑफ रिक्वायरमेंट जो है ना वो इतनी जल्दी नहीं खुलता, उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है और बाद में जाके खुलता है। अब देखा ना लिखा हुआ है लेवल 1 लॉक, मेरा भी लेवल 1 लॉक नहीं हुआ अनलॉक, लेवल 2 लॉक भी लिखे होते हैं, लेवल 3 लॉक भी लिखे होते हैं, रूम ऑफ रिक्वायरमेंट अभी नहीं खोलेगा। उसके बाद एक और चीज़ है, अच्छा सो व्हाट द थिंग इज इन दिस गेम you can see the whole Quidditch ground or stadium, whatever, but when the game starts and when you get sorted, the headmaster, he's kind of a rude guy, so he's like, you guys can't play Quidditch because of the incident that happened. Apparently someone got really badly injured. तो हमें मतलब जो सारे इस गेम को खेलते हैं ना, उन्हें लग रहा है कि कुछ DLC इज़ लाइक एन एड ऑन, विच जो बड़ी ए गेम्स कहते हैं, जो बहुत बड़ी गेम्स होती हैं, यानी जो पूरा साल जिनका इंतज़ार होता है, जैसे असैसिन्स क्रीड इज़ एन ए गेम, साइबरपंक वाज एन ए गेम, तो उन्हें लगता है कि एक एड ऑन आएगा इस गेम का, उसमें आप क्विडिच खेल सकेंगे, ठीक है ना, फुल टाइम, क्योंकि इसका पूरा स्टेडियम बना हुआ है। और अभी तो मुझे फ्लाई करना भी नहीं आया, वो भी मैं करूँगा। चुड़ा था यार, डैम इट। ये उड़ा है पेज। I'm pretty sure इधर ही कहीं हेडमास्टर का ऑफिस भी होगा। वो गोस्ट खड़ा है, मैं भी गोस्ट दिखाता हूँ, बहुत फिट गोस्ट है यार, इसका नाम मैं भूल गया हूँ, पीव्स। Burn the castle down! Nice and warm! Dude. Look at me! Okay. ये पता है वो है, अच्छा हाँ, Shade the fat lady. Revelio. This portrait cards the blah 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 requires a password from which to enter. She and her friend Violet are known to wander among the other portraits periodically about those to watch. यार I don't know what's the password यार. Problem वही है ना, I'm not in Gryffindor anymore because I restarted the game. I wanted to become a dark wizard, so I chose Slytherin, so I can't go there anymore. Whoa, 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 whoa. Revelio. डम्बलडोर ऑफिस दिखाओ यार। वो हेडमास्टर डम्बलडोर नहीं है यार, अजीब सा है उसका नाम। देयर इज सम ब्लैक डूड, ही इज फ्रॉम द ब्लैक फैमिली, आई थिंक फिलियस, आई डोंट नो व्हाट। ही इज नॉट अ कूल गाय यार, द हेडमास्टर इज अ रूड पर्सन। आई थिंक इट्स इन्हें अच्छा किया हेडमास्टर का, पता है वो एक इमेज आपके दिमाग में बना होता है, ही इज सम यू नो ही इज दिस ग्रैंड विजर्ड, ही इज दिस रियली गुड गाय, बट इन दिस गेम जितनी मैंने खेली है ही इज नॉट अ गुड गाय यार। मतलब वो जो पॉम्पस लोग नहीं होते वैसा सा है। पता है अभी वो, अब मुझे ये भी नहीं पता कि दिन कैसे आएगा, ठीक है ना। मे बी आई शुड गो टू माई रूम एंड स्लीप, लेट्स ट्राई दैट, क्योंकि देखा ना अभी कोई है ही नहीं, स्टूडेंट्स है ही नहीं कहीं। ओके, ग्रैंड स्टेयरकेस, रेवेनक्लो टावर, स्लिदरन कॉमन रूम। Okay. Let me go try and take a nap.
वो वेट अ मिनट, मुझे लगता है कोई और घोस्ट था। एवरीवन स्लीप। मैंने अभी तक सर निकलेस नहीं देखा। वो हेडलेस सर निकलेस याद है ना? वो मैंने नहीं देखा अभी तक गेम में। ओके, पता नहीं यार सोएगा कैसे। आई नेवर माइंड। असल में पता है ना, गोस्ट की भी एक स्टोरी होती है। वो मॉर्निंग मर्टल याद है ना? अब वो तो वोल्डेमॉर्ट बच्चा था ना, उसके ज़माने में मरती है मॉर्निंग मर्टल। नहीं नहीं, घूमता नहीं रहूँगा यार, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। तो मॉर्निंग मर्टल जो है ना, वो ऑब्वियसली इस गेम में नहीं नज़र आएगी क्योंकि वो अभी तक पैदा ही नहीं हुई और मरी नहीं है। स्टार्टिंग तो बहुत फिट है, स्टार्टिंग तो वाकई अच्छी है। गेम अच्छी है ऑल टुगेदर। मैं क्वेस्ट कोई नहीं कर रहा ना इस वक्त। ये हेल्प द स्ट्रेंजर कर लेते हैं यार, रुको। व्हाटएवर दिस इज। मैप पे जाके क्या है, इधर कुछ है। अच्छा, हर्बोलॉजी क्लास ले लेते हैं यार, तुम भी क्या याद रखोगे, छोड़ो। इधर से करीब पड़ेगा। उसमें वो जो पौधा शौधों की क्लास नहीं होती वो होगी अभी। मैंने अभी तक वो नहीं अटेंड की। ये वो है, ग्रीन रूम है, ग्रीन हाउस व्हाटएवर। कितना फिट है यार, मैंने नहीं देखा था अभी तक। शिट, नाइस यार। How nice to see you, my young friend. Okay, let's wait. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. This is classic. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly! Place your mandrake in the new pot and cut out the soil! The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I wonder if hippogriffs like knotgrass. I've heard this word, dittany.
Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I'll say. Nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see, how to balance my star thistle. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but your lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. शुरू में आप अपना नाम रख सकते हैं ना मैंने अपना नाम ये रखा है मैंने पिछले कैरेक्टर का नाम रखा था सेवरस पॉटर अच्छा होल्ड LB एंड टैप देन Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class.
ये मैंने खरीदी है। डाउनलोड का तो पता नहीं, शायद क्रैक्ड वर्जन है इसके, आई थिंक। मैंने तो खरीदी थी। And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. My plants offer so much, don't care much for plants. Should I be rude? Okay, let's be rude. Thank you, Professor, but looking after plants isn't all that thrilling to me. I think you'll come to see that the fruit is well worth the labor. As we herbologists like to say, Almost है, इसका basic version है, कोई $60 का है. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendships. क्लास भी लेते हैं, रुको। मैंने नहीं ली अभी तक। भाई आप कहाँ से हो? मेरे बीपीसी गेम चैनल। मैं रावलपिंडी से हूँ। तो आप कौन सी गेम खेलते हैं उसमें? Someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Professor Black would never allow that. I saw an aura bag on Professor Sharp's desk. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. Trending game खेलें. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. आप शॉर्ट्स अपलोड करें जो टिकटॉक की तरह नहीं होती पोर्ट्रेट मोड when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. कितना मजा आया ना, पिघल जाए, लग रहा है पिघला हो जो वो है। Damn it. I see most of you have not forgotten how to stir.
not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more... Man, I'm not gonna lie, this dude, he looks like a Come see shady me when character, you've I'm not finished gonna lie. brewing. भाई वैसे And we'll see if it was crack skill or कब luck the आएगी? first पता time नहीं, round. आप जो है ना एक ज़माने में पता है मेरे पास कोई भी क्रैक गेम नहीं है, मेरे पास जो एक वाहिद सॉफ्टवेयर है ना जो वो है पायरेटेड, वो एडोबी के सारे सॉफ्टवेयर हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और आपको उतनी प्राइस महीने में देनी होती है। बाकी सब चीज़ें मैंने ओरिजिनल है, मेरी विंडोज़ 11 ओरिजिनल है, एंटीवायरस से लेकर सब कुछ, बट मैं कुछ कह नहीं सकता आप कहाँ आते हैं। You heard correctly. What do you want to know? Yeah. Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I can get you that feather. Well, let's do it. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. अच्छा मेरे पास ना एक स्पेल है, ठीक है ना, वो आपको इनविजिबल कर दे। इनविजिबल नहीं, यू गेट ब्लरी। ये देखना। Remember, precision is key. यार कितना क्यूट बर्ड है। Whoa, wait a minute. Collect Ashwind eggs. Wizard always has a few potions on hand. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Now what? Brew an Edurus potion. Oh, never mind. Proficiency and potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Get it! Again. Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Not be a pussy. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence.
And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. A woman needs help just across the beyond the world. Dog helps us train. Okay, let's do this. Seems mysterious. 13, 10. एक सेकंड ट्रेड भी अप्लाई कर सकते हैं वो कैसे नेवर माइंड एक मिनट my bad I'm wasting my time. Hogsmeade map. ये यहाँ जाना Not sure how I'd fare in a little place like this. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Let's get it done, shall we? Incendio. Potato. I'll watch the light go out of your eyes. Okay, now there's gonna be a boss fight. Get over here, you insolent! We can hold them up! I'm not going anywhere with you. You'll take it! Incendio! Potato! You're easier to spot than an eruption. No, don't. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous.
Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin के बारे में पता है कुछ? Of the legend of King Crumb? Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Get the Mallowsweet from the trunk. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. No, what? Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am Revelio. curious about these pyres. Revelio. Conjuring fire might work. These are pyres after all. Incendio. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Fascinating. Merlin's beard! How beautiful! What a day. I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more.
I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety वो of देखा my है? notes and books. वो जो ऊपर है. This is probably the most iconic thing about Hogwarts. I don't know what this bridge. एक सेकंड. इस ब्रिज पे जाते हैं. Hogwarts map. This bridge should be. कहाँ होगा यार ये ब्रिज? ये क्विडिच वाला वो हो गया स्टेडियम ये. तो मैं अपने ना माउस से जाता हूँ. ये यहाँ. Not don't exit. Yeah. Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope. Get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. Professor Black is the headmaster. Okay, so, एक minute. Check this out. Aye, so cute, man. यार मुझे बहुत फिट लग रहा है यार. ये किसी करीब से नहीं देख सकते. Damn it, never mind. Scrope? Who is Scrope? Revelio. Accio. Accio. Shit, यार. Revelio. Accio. Pumpkins. Ah, I think I know just the place. Revelio. Accio. Down to the water's edge. This had better not be a trick.
that. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Let's be an asshole. I'm not so sure about this. I don't need the headmaster upset with me. Oh, the headmaster won't be upset. Scrope simply wants to surprise him. Scrope will explain. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. Tell me more about this treasured ring. Oh, it's adorned with the Black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. How did you know that I'd found a book and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. How did you injure your ear? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. My goodness. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. And... Dude. Wait a minute. Is there any loot? Revelio. Never mind. Incendio. Potato.
Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Could it be? A visitor? Oh! Ah! Ooh! Ah! The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Revelio. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. Phew, that boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to house elves.
I'm gonna go to sleep now.